नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ અને સાથે જયસેન આચાર્ય ભગવાનની ટીકા તાત્પર્ય વૃત્તિ એનો પણ આપણે આધાર લઈએ છીએ। પ્રવચન સારના સ્વાધ્યાયમાં બીજો અધિકાર જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન એની શરૂઆત થઈ છે। જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપનની ગાથા 98મો સ્વાધ્યાય પૂરો થવા આવ્યો છે। તે પછીથી 99મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય આજે આપણે શરૂ કરવાના છીએ। 98મી ગાથાનો ઘણો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે કર્યો અને એમાંથી ઘણા ન્યાય સમજાવ્યા। એ પછીથી 99મી ગાથાની અંદર ઉબોધઘાતમાં કહે છે કે હવે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક હોવા છતાં દ્રવ્ય સત છે એમ દર્શાવે છે। જો 98ની ગાથાના અંતે તો એમ કહ્યું કે આ પ્રમાણે હોવાથી એમ નક્કી થયું કે દ્રવ્ય સ્વયંમેવ સત છે, સ્વયંમેવ સત છે એ તો નક્કી થયું અને આમ જે માનતો નથી તે ખરેખર પર સમય જ માનવો। એ વાત પછીથી હવે 99માં એમ કહે છે કે સત તો છે પણ સાથે એમ લેવું છે કે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવાત્મક હોવા છતાં દ્રવ્ય સત છે, હોવાપણે છે, અસ્તિત્વ છે, ઉત્પાદ થઈ રહ્યા છે, વ્યય થઈ રહ્યો છે અને પાછું અસ્તિત્વ। પ્રશ્ન જરાક જુદી રીતે વિચારીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ગાથાનું પ્રયોજન શું હોઈ શકે। સત છે, હોવાપણે છે, એનું અસ્તિત્વ ટકીને રહ્યું છે એવી વાત જયારે કહેવામાં આવે છે અને સાથે એમ પણ કહેવામાં આવે કે પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય છે અને ધ્રુવપણે વસ્તુ કાયમ ટકીને રહે છે, આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે અને એ દ્રવ્ય એ સત છે અને એ વાત અહીંયા આચાર્ય ભગવાને 99મી ગાથામાં કરી છે। તો આપણે 99મી ગાથા લઈએ। સંસ્કૃતમાં 99મી ગાથા આ પ્રમાણે છે। સદ અવસ્થિતમ સ્વભાવે દ્રવ્યમ દ્રવ્યસ્ય યો હિ પરિણામ અર્થેષુ સ્વભાવ સ્થિતિ સંભવ નાશ સંબંધ। ગુજરાતીમાં ગાથા આ રીતે છે। દ્રવ્યો સ્વભાવ વિશે અવસ્થિત, તેથી સત સૌ દ્રવ્ય છે। ઉત્પાદ દ્રવ્ય વિનાશયુત, પરિણામ દ્રવ્ય સ્વભાવ છે। ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે સ્વભાવે અવસ્થિતમ દ્રવ્યમ સત, સ્વભાવમાં અવસ્થિત એમાં રહેલું, અવસ્થિત રહેલું ટકેલું, સ્વભાવમાં અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય સત છે। દ્રવ્યસ્ય યહિ સ્થિતિ સંભવ નાશ સંબંધ, પરિણામ તે અર્થેષુ સ્વભાવ। દ્રવ્યનો જે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય સહિત પરિણામ તે પદાર્થોનો સ્વભાવ છે। સ્વભાવમાં અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય સત છે। દ્રવ્યનો જે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય સહિત પરિણામ તે પદાર્થોનો સ્વભાવ છે। ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે કે અહીં વિશ્વને વિશે, અહીંનો અર્થ થાય છે વિશ્વને વિશે। અહીં સ્વભાવમાં નિત્ય અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય સત છે
દ્રવ્ય સ્વભાવમાં અવસ્થિત છે અને એ નિત્ય અવસ્થિત છે, કાયમ રહેલું છે, સ્વભાવમાં જ રહેલું છે. અહીં સ્વભાવમાં નિત્ય અવસ્થિત હોવાથી દ્રવ્ય સત છે. સ્વભાવ દ્રવ્યનો દ્રવ્ય ઉત્પાદ વિનાશની એકતા સ્વરૂપ પરિણામ છે. સ્વભાવ કેવો છે? એ દ્રવ્ય ઉત્પાદ વિનાશની એકતા સ્વરૂપ પરિણામ એવો દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. એટલે એ હંમેશ થાય છે, એ જ પ્રમાણે રહે છે. સ્વભાવ કયો ને? સ્વભાવ, પોતાનો ભાવ. કોની વાત ચાલે છે? દ્રવ્યની વાત ચાલે છે. કયા દ્રવ્યની વાત ચાલે છે? કોને આ વાત લાગુ પડે છે? છ દ્રવ્યને આ વાત લાગુ પડે છે. બધા દ્રવ્યોનો સ્વભાવ એવો છે. એમાં જે ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે અને દ્રવ્યપણે વસ્તુ કાયમ ટકીને રહે છે, એમ દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યયની એકતા સ્વરૂપ એનો સ્વભાવ છે. અને એવા સ્વભાવમાં એ હંમેશા રહ્યું છે, નિત્ય એમાં જ રહ્યું છે, સ્વભાવમાં નિત્ય અવસ્થિત છે. આગળ કહે છે કે જેમ દ્રવ્યનું વાસ્તુ સમગ્રપણા વડે, અખંડપણા વડે એક હોવા છતાં, વાસ્તુ એટલે એનું ઘર, રહેઠાણ. અહીંયા ફૂટનોટમાં થોડો વધારે વિસ્તાર કર્યો છે. દ્રવ્યનું વાસ્તુ એટલે દ્રવ્યનો સ્વ વિસ્તાર, દ્રવ્યનું સ્વ ક્ષેત્ર, દ્રવ્યનું સ્વ પદ, દ્રવ્યનું સ્વદળ. અને સામાન્ય ભાષામાં એનો અર્થ, વાસ્તુનો અર્થ થાય છે ઘર, રહેઠાણ, નિવાસસ્થાન, આશ્રય ભૂમિ. તો દ્રવ્યનું વાસ્તુ સમગ્રપણા વડે, અખંડપણા વડે એક હોવા છતાં વિસ્તાર ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પ્રદેશો છે. જો અહીંયા પ્રદેશની વાત કરવી છે, દરેક દ્રવ્યને પ્રદેશ છે. જીવને અસંખ્ય પ્રદેશ છે, એ અસંખ્ય પ્રદેશી છે. આકાશમાં લોકાકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ છે અને અલોકાકાશના અનંત પ્રદેશ છે, એટલે આકાશને અનંત પ્રદેશી કહેવાય. ધર્માસ્તિકાયના અને અધર્માસ્તિકાયના કેટલા પ્રદેશ? તો કે લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશ છે તેટલા જ અસંખ્ય પ્રદેશ છે. એટલે લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશ અસંખ્ય પ્રદેશ છે, તે જ પ્રમાણે ધર્માસ્તિકાયના, અધર્માસ્તિકાયના અને જીવના, દરેક જીવના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. પૂતગળમાં પૂતગળ પરમાણુ એક પ્રદેશી છે. પૂતગળ પરમાણુ એક પ્રદેશી છે, પણ પૂતગળ પરમાણુ ભેગા થાય છે, સ્કંદ બને છે, એટલે એને પણ કાય કહેવાય છે. એટલે 5 અસ્થિકાય એમ કહેવાય છે. અને છઠ્ઠું દ્રવ્ય કાળ દ્રવ્ય. કાળ દ્રવ્ય પણ એક પ્રદેશી છે અને 2 કાળાણુ ભેગા થાય નહીં, એટલે એને કાય કહેવાતું નથી. એ અસ્થિ છે પણ કાય નથી, પણ એ એક પ્રદેશ છે. તો અહીંયા આ પ્રદેશની વાત ચાલે છે કે એના જે પ્રદેશ છે, તો એના સૂક્ષ્મ અંશો, તે પ્રદેશો એમ વાત લીધી ને, એના પ્રદેશ, એક પ્રદેશ જેનું પરિમાણ છે એની માટે પણ અહીંયા આ વાત લાગુ પડી જાય છે. એટલે કહે છે કે જેમ દ્રવ્યનું વાસ્તુ સમગ્રપણા વડે, અખંડપણા વડે એક હોવા છતાં વિસ્તાર ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પ્રદેશો છે. એક પ્રદેશ, એના પણ સૂક્ષ્મ અંશોનો વિચાર કરીએ ત્યારે એમ થાય કે એ એક પ્રદેશ છે, છતાં પણ સૂક્ષ્મ અંશો એમાં, એ વિસ્તાર છે એનો. જે વિસ્તાર ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પ્રદેશો છે. તેમ દ્રવ્યની વૃત્તિ સમગ્રપણા વડે એક હોવા છતાં પ્રવાહ ક્રમમાં પ્રવર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પરિણામો છે. વૃત્તિ એટલે વર્તવું, વૃત્તિ એટલે વર્તવું હોવું તે હોવા પણ દ્રવ્યની વૃત્તિ વર્તવું, સમગ્રપણે દ્રવ્ય તો વર્તે છે. તો કહે છે કે તેમ દ્રવ્યની વૃત્તિ સમગ્રપણા વડે એક હોવા છતાં પ્રવાહ ક્રમમાં વર્તનારા તેના જે સૂક્ષ્મ અંશો તે પરિણામો છે.
જેમ વિસ્તાર ક્રમનું કારણ પ્રદેશનું પરસ્પર વ્યતિરેક છે, તેમ પ્રવાહ ક્રમનું કારણ પરિણામોનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે. વ્યતિરેક એટલે ભેદ છે, જુદાપણું છે. વિસ્તાર ક્રમનું કારણ શું છે કે એક પ્રદેશથી બીજો પ્રદેશ ભિન્ન છે, જુદો છે, એટલે એ પ્રદેશનું વ્યતિરેકપણું છે. તેવી રીતે પ્રવાહ ક્રમનું કારણ પરિણામોનો પરસ્પર વ્યતિરેક છે. એટલે ભેદ, એકબીજામાં અભાવ, એકનો બીજામાં અભાવ હોય, એકથી બીજા પરિણામ છે તે જુદા છે. એક પરિણામ તે બીજા પરિણામ રૂપ નથી, તેથી દ્રવ્યના પ્રવાહ ક્રમમાં છે. તો અહીંયા સુધી આપણે આજે સ્વાધ્યાય રાખીએ છીએ. આગળના ભાગને આપણે પછી આવતા સ્વાધ્યાયમાં વાંચનમાં લઈશું. અત્યારે વાત આપણે 98મી ગાથાનો છેલ્લો ભાગ છે એની ચાલે છે. 98મી ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લગભગ આપણે પૂરો કર્યો છે, પણ એની મૂળ વાતને યાદ કરી અને છેલ્લો ભાગ જે છે તે આપણે આજે લઈએ છીએ. ફરીથી એ પણ વાંચનમાં પણ લઈએ છીએ. મૂળ વાત શું હતી 98મી ગાથાની અંદર? ફરીથી ઉपोદઘાતને યાદ કરીએ તો કે દ્રવ્યોથી દ્રવ્યાંતરની ઉત્પત્તિ થતી નથી. દ્રવ્યોથી દ્રવ્યાંતરની ઉત્પત્તિ અને દ્રવ્યથી સત્તાનું અર્થાંતરપણું નથી થતું. અને એ વાતનું ખંડન અહીંયા 98મી ગાથામાં કરવામાં આવ્યું છે. દ્રવ્યથી એટલે કે કોઈ દ્રવ્યથી અન્ય દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને દ્રવ્યથી અસ્તિત્વ કોઈ જુદો પદાર્થ નથી. એ બે વાત અહીંયા 98મી ગાથામાં કરવામાં આવી અને એનો ઘણો વિસ્તાર કરી અને સમજાવવામાં આવ્યું. હવે અત્યારે જે છેલ્લો ભાગ ચાલે છે, 5 લીટી છેલ્લી બાકી રહી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો, તો એ છેલ્લી 5 લીટીને પણ આપણે અહીંયા વાંચનમાં લઈએ, જેથી આપણને ગુરુદેવે આજે જે વાત સમજાવી છે એ આપણને સ્પષ્ટ સમજમાં આવી જાય. તો એ વાત આપણે લઈએ છીએ. અહીંયા કહે છે કે એ રીતે ભેદ નિમગ્ન થતા તેના આશ્રય તેના કારણે થતી પ્રતીતિ નિમગ્ન થાય છે. નિમગ્ન એક શબ્દ જે હતો, તો નિમગ્ન એટલે એમાં ડૂબી જવું, એટલે કે એ ગૌણ થઈ જવું, એ ગૌણ થઈ જાય છે. એ રીતે ભેદ જે છે તે ગૌણ થઈ જાય છે, એ વાત આપણને સમજાવી. અને એમાં જે વસ્ત્રનું ઉદાહરણ લઈને જે સમજાવવામાં આવ્યું ત્યારે એ વાત એ રીતે સમજાવી કે સફેદ વસ્ત્ર જ છે એ જયારે એ રીતે દ્રવ્યની અપેક્ષાથી જે લેવામાં આવે તો દ્રવ્યને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો એમાં પછી કોઈ ભેદ રહેતા નથી. ગુણના ભેદ, ગુણ ગુણીનો ભેદ જે છે તે પછી રહેતો નથી, એમ વાત કરી. એટલે નિમગ્ન એટલે પછી એ ભેદ જે છે તે અંદર ડૂબી જાય છે, ભેદ રહેતો નથી, ભેદ ગૌણ થઈ જાય છે. અને એમ પ્રતીતમાં આવે છે. ક્યારે એમ પ્રતીતમાં આવે છે કે જ્યારે દ્રવ્યને દ્રવ્ય અપેક્ષાથી જોઈએ, તો પર્યાય અપેક્ષાથી જોઈએ તો આપણને ભેદ દેખાય છે. દ્રવ્યને પર્યાર્થિક નયથી જોઈએ છીએ તો એમાં આપણને ભેદ દેખાય છે, પણ દ્રવ્યને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ તો દ્રવ્યમાં કોઈ ભેદ દેખાતો નથી. એટલે એ ભેદ પછી એ ગૌણ થઈ જાય છે. અને એ વાત અહીંયા આગળ ચાલી રહી છે. તો કહે છે કે એ રીતે ભેદ નિમગ્ન થતા તેના આશ્રય તેના કારણે થતી પ્રતીતિ પણ નિમગ્ન થાય છે. એમાં પણ પછી કોઈ ભેદ જણાતો નથી, એ પણ ગૌણ થઈ જાય છે, ભેદ ગૌણ થઈ જાય છે. અને તે પ્રતીતિ નિમગ્ન થતા કઈ પ્રતીતિ? જે ભેદની પ્રતીતિ જે થતી હતી પહેલા પર્યાયથી જોવાથી, પર્યાયની મુખ્યતાથી જોવાથી જે પ્રતીતિ થતી હતી, ભેદની પ્રતીતિ, એ પ્રતીતિ નિમગ્ન થતા એ પણ ગૌણ થઈ જતા અયુત સિદ્ધત્વ જનિત અર્થાંતરપણું નિમગ્ન થાય છે. એટલે જોડાણ વિનાનું અર્થાંતરપણું પણ એ જ રીતે ગૌણ થઈ જાય છે. તેથી બધું આખું એક દ્રવ્ય જ થઈને રહે છે. એ રીતે દ્રવ્ય આખું એક જ થઈને રહે છે, એ વાતને અહીંયા સિદ્ધ કરી. હવે ત્યાંથી આગળ આજે સ્વાધ્યાય ચાલશે. તો કહે છે કે અને જ્યારે ભેદ ઉન્મગ્ન થાય છે, એટલે ભેદ આપણને ઉપર જણાય છે, તરી આવે છે, એનો ખ્યાલ આવે છે, તો તે ઉન્મગ્ન થતા
તેના આશ્રય તેના કારણે થતી પ્રતીતિ એ ઉન્મગ્ન થાય છે, અને તે પ્રતીતિ ઉન્મગ્ન થતા અયુત સિદ્ધત્વ જનિત અર્થાંતર પણ ઉન્મગ્ન થાય છે. ત્યારે એમાં જોડાણ વિનાનું અયુત સિદ્ધત્વ જનિત એટલે જે જોડાણ વિના જે એમાં અર્થાંતર પણ એક થી બીજું પણ જે દેખાય છે એ ત્યારે ખ્યાલમાં આવે છે. જો એક દ્રવ્યથી જે બીજું જે દેખાવું જે છે એમાં વાત એ રીતે લીધી હતી કે એ દ્રવ્યની અંદર જ છે એમ લઈએ, દ્રવ્યની અંદર જ સત્તા છે એમ જયારે લેવામાં આવે તો બરાબર છે, એમાં જોડાણ નથી, અને છતાં એવું આપણને એવું બે પણ દેખાય છે. અને પછી એના વિશે આપણને વધારે સમજ આપવામાં આવી કે એ ખરેખર જે જણાય છે તો પણ એમાં બે અપેક્ષા રહેલી છે કે પર્યાર્થિક નયથી જોઈએ તો એમ દેખાય છે, ગુણ અને ગુણી એમ બે દેખાય છે, એ પર્યાર્થિક નયથી છે. દ્રવ્યાર્થિક નયથી ગુણ ગુણીનો ભેદ એમાં પણ રહેતો નથી. એટલે જે ઉન્મગ્ન થયું, જે ઉપસી આવ્યું અથવા તો પ્રગટ થયું એવું એ જે અયુત સિદ્ધત્વ જનિત અર્થાંતરપણું જે છે તો એ ક્યારે દેખાય છે તો કે પર્યાર્થિક નયથી જોઈએ છીએ ત્યારે. તો ત્યારે પણ તે હવે આગળ કહે છે કે ત્યારે પણ તે દ્રવ્યના પર્યાયપણે ઉન્મગ્ન થતું હોવાથી જેમ જળ રાશિથી જળ કલ્લોળો વ્યતિરિક્ત નથી, જુદા નથી. જળ રાશિથી જળના કલ્લોળો એટલે કે એના તરંગો, જેમ કે નદી કે સમુદ્ર જે છે એનું પાણી છે એનાથી એના તરંગ જુદા નથી, તેમ દ્રવ્યથી વ્યતિરેક હોતું નથી. શું દ્રવ્યથી વ્યતિરેક હોતું નથી? જે ઉન્મગ્ન થાય છે એવું, એ ઉન્મગ્ન થાય છે એવું અર્થાંતર પણ એ પર્યાર્થિક નયથી જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એ દ્રવ્યથી જુદું એવું જણાય છે. એટલે પર્યાય રૂપે જે જણાય છે ત્યારે એ જુદું છે, છતાં પણ ખરેખર જોઈએ તો એ દ્રવ્યથી જુદું નથી. અને એમાં ઉદાહરણ આપ્યું કે જેમ એ પાણી છે એનાથી એના તરંગ જુદા નથી, સમુદ્રથી તરંગ જુદા નથી, તેમ દ્રવ્યથી એનું જુદાપણું હોતું નથી, દ્રવ્યથી વ્યતિરેક હોતું નથી. અને હવે આગળ કહે છે કે આ પ્રમાણે હોવાથી એમ નક્કી થયું કે દ્રવ્ય સ્વયંમેવ સત છે, અને આમ જે માનતો નથી તે ખરેખર પર સમય જ છે. પર સમય છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. તો આજે આ વાતનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ કરે છે તે આપણે લઈએ. પ્રવચન સુધા ભાગ ચોથો, એના પાના નંબર 224 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ શરૂઆત કરે છે તે લઈએ છીએ. प्रवचन का 98 गाथा चलो पैराग्राफ में फरी में, और जब वेद उन्मग्न होता है क्या रे छेले पैराग्राफ है ना 5 नीति कब दूसरा तो हो गया था, दृष्टि अंदर गई थी ना तो द्रव ऊपर पर्याय था हो गया। यहाँ क्या कहते हैं, सूक्ष्म बात है कि सत नाम द्रव्य जो है, द्रव्य आत्मा आदि छह द्रव्य, ये सत है, उसमें सत्ता नाम का गुण है, ये अतद्भाव तरीके भिन्न है। अतद्भाव तरीके એટલે ગુણ તે દ્રવ્ય નહીં, દ્રવ્ય તે ગુણ नहीं, ऐसा उसकी दो दृष्टि से देखने आया एम कहते हैं। जब आसात द्रव्य है, सत्ता गुण है, ऐसा भेद पर्याय दृष्टि से देखने से ये अतद्भाव भिन्न भाषते हैं। पर द्रव्य दृष्टि से देखो तो सत्य ने सत्ता भिन्न नहीं दिखते हैं, निमग्न हो जाता है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सत्य ने सत्ता दो निमग्न नाम एक हो जाता है, भिन्न नहीं रहते। આવી વાત છે। पर्याय दृष्टि से देखो भेद क्या खेल
जब भेद उन्मग्न होता है, जब भेद है उन्मग्न होता है, वह उन्मग्न होने पर उसके कारण होती हुई प्रतीति ज्ञान, ये उनमें ख्याल में आता है कि सत द्रव्य है, सत्ता गुण है। ऐसी पर्याय दृष्टि से देखने से ऐसा ख्याल में आता है। उसके उन्मग्न होने पर अयुत से जनित अर्थांतरपना उन्मग्न हो जाता है। પછી क्या कहते हैं, बीन पदार्थ है ये निमग्न नहीं हो जाता। सत से सत्ता भिन्न है, ये उन्मग्न हो जाता है। द्रव्य है, सत्ता है, ऐसा उन्मग्न नाम बाहर दिखने में ऐसा आता है कि सत द्रव्य है, वो सत्ता है। ऐसी बात है। उनके उन्मग्न होने पर अयुक्त से जनित अर्थांतर उन्मग्न होता है। तब भी द्रव्य के पर्याय रूप से उन्मग्न होने से तब भी सत्ता द्रव्य है और सत्ता गुण है। उसकी भेद दृष्टि से देखो तो भी जैसे जल राशि से जल तरंग व्यतिरिक्त नहीं, जैसे जल की राशि से जल का तरंग जुदा नहीं, ऐसे पर्याय दृष्टि से देखो तो भी सत्य से सत्ता भिन्न नहीं, सत्य से सत्ता भिन्न है, अभिन्न नहीं हो। वेद दृष्टि से देखो तो ये जल से तरंग जैसे भिन्न है, व्यतिरिक है, ऐसे सत्य से सत्ता भिन्न है। આવી વાત છે સૂક્ષ્મ હવાના વેપાર જેમાં वस्तु है ये द्रव्य और उसमें सत्ता है ये गुण, पर ये सत्ता में द्रव्य दृष्टि से देखने से तो निमग्न हो जाता, भेद निमग्न हो जाता है, भेद दिखने में आता नहीं। पर पर्याय दृष्टि से देखो तो सत्ता द्रव्य और सत्ता गुण उमग्न आता है, ख्याल में आ जाता है ऊपर। हाँ, ख्याल में आ जाते हैं। वो कारण से द्रव्य से सत्ता भिन्न नहीं, द्रव्य से सत्ता भिन्न है। उनका पर्याय दृष्टि से देखे तो भी द्रव्य से सत्ता भिन्न है। આવી વાત છે, સમજ में आया? हाँ, तो ख्याल में આવ્યું છું कि नियम सार में एक श्लोक है कि ये आत्मा अभिन्न है, अभेद है, उसमें सब द्रव्य ने सत्ता भिन्न भी दृष्टि में नहीं आना चाहिए, उससे भी विकल्प उठते हैं। द्रव्य जो टिकाव है, एक रूप है, ऐसी दृष्टि में जो कहीं विकल्प उठते हैं तो कहते हैं आचार्य पद्मधारी देव कि ऐसा विकल्प जो उत्पन्न होता है, ऐसा भेद बुद्धि वाली की मुक्ति होगी कि नहीं, अरियंतना मत में कौन जाने क्या। क्या किया? भगवान आत्मा गुण ने गुण ही अभेद है, अभेद में गुण का भेद का विकल्प उठे तो कहते हैं कि उसकी मुक्ति होगी कि नहीं, अनंत का मत में कौन जाने। अर्थात अनंत का मत में भेद का विकल्प उठा हो, उसकी मुक्ति होगी नहीं। समझ में आया? नियम सार में, नियम सार मैंने पूछा उसमें आत्मा एक स्वरूप है, अनंत गुण नो एक रूप, अभेद है। आज तो ज्ञान कराना है तो पर्याय दृष्टि से देखो तो भी सत्य ने सत्ता भिन्न नहीं, व्यतिरेक, सत्य सत्ता व्यतिरेक है। एक मत चलने में है, द्रव्य है उससे सत्ता व्यतिरेक है, भिन्न ज्ञान कराया है। पर ध्यान में जब
अभेद दृष्टि होती है, तो द्रव्य में सत्ता भिन्न है, ऐसी पर्याय में से जो दिखते हैं, ये अंतर्दृष्टि करने से द्रव्य में सत्ता भिन्न है ऐसा भासते नहीं। द्रव्य में सत्ता भिन्न है, एकाकार है, ऐसी अंतर में दृष्टि करना वो सम्यक दर्शन का कारण है। दया दान व्रत भक्ति से तो सम्यक दर्शन नहीं होता, पर्याय का लक्ष्य से भी नहीं होता, पर गुण गुणी का भेद जो है कहा कि पर्याय दृष्टि देखो तो सत्ता भिन्न नहीं, व्यतिरेक नहीं है, जुदी नहीं है, पर्याय दृष्टि से पण तो અહીંયા તો તત્વની જ્યાં દૃષ્ટિ ચલતી અંદર, ત્યારે तो द्रव्य की सत्ता वस्तु सत है न उसकी सत्ता गुण है, ये भेद भी निमग्न हो जाता है। अभेद ऊपर दृष्टि होने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? ऐसा होने से यह निश्चित हुआ आखिर का दो कि द्रव्य स्वयं में सत है, द्रव्य स्वयं में सत है, जूदू नहीं એટલે ઈ છે। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तव में पर समय मिथ्या दृष्टि मानना। द्रव्य स्वयं में सत है, स्वयं में सत, द्रव्य सत्ता ने सत भिन्न है, माटे द्रव्य सत नहीं, ऐसा नहीं, स्वयं में सत है, सत्ता के कारण से स्वयं में सत है ऐसा नहीं। આવો વિચાર ને ક્યાં વાણિયાને નવરા શું છે, ધંધાની ખબર ન મળે છે। द्रव्य का उसमें टेस्ट लिया है। अरहंतना मत में, वितराग त्रिलोकनाथ का मत में अभेद दृष्टि में जो भेद उत्पन्न होता है, विकल्प आदि के पर्याय ऊपर लग जाता है, कि गुण गुणी का भेद ऊपर लग जाता है, तो उसको मुक्ति होगी कि नहीं कौन जाने। हरियंत महामत में उसका अर्थ है हरियंत का मत में उसकी मुक्ति होगी नहीं। समझ में आया? ये 98। अब यह बतलाते हैं कि उत्पाद वही ध्रुवात्मक होने पर भी द्रव्य सत है, सत्ता है तो भी द्रव्य सत है, उत्पाद वही ध्रुवात्मक होने पर भी द्रव्य तो सत है। जेनी बात है, गाथाओं जेनी प्रवचन सार, भगवान की दीव ध्वनि का सार। 99 सत अवठितम, सत अवठिदम सहावे दवम दवस जो ही परिणामो अथेसु सु सहावो छीदी संभव नासबंधो। नीचे हरिगीत। द्रव्यो स्वभाव विषय अवस्थित तेथी सत सो द्रव्य है, उत्पाद द्रव विनाशयुत परिणाम द्रव्य स्वभाव है। टीका घणो विषय છે भैया, टीका है ना। यहाँ विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से द्रव्य सत है। द्रव्य नाम आत्मा, द्रव्य नाम परमाणु आदि द्रव्य सब नहीं है ना। सब विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित है, द्रव्य ही स्वभाव में नित्य अवस्थित है, वो कारण से द्रव्य सत है। स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव द्रव्य उत्पाद में विनाश की
एकता स्वरूप परिणाम है। वस्तु का स्वभाव उत्पाद ध्रुव एकता रूप परिणाम का स्वभाव है। एक समय में तीनों है। है विश्व में या जगत में तत्व ज्ञान की खबर नहीं, पादरा धर्म हो जाए, मंदिर के दर्शन करें, सामायिक हो जाए, पूछा एकड़ा मीना ना मींडा है, मिथ्या भाव है। वो तत्व क्या है? आत्मा अंदर से है। ये गुण गुणी का भेद के विकर्म उठते हैं तो भी बंध का कारण है। जानने में आता है कि सत है, ये सत्तावान है, जानने में आवे અને प्रसिद्धि भी ऐसे आप देखने में आवे, पर दृष्टि जहाँ करना है द्रव्य पर, ત્યારે सत्ता है ऐसा नहीं, स्वयं सत्ता से नहीं है, स्वयं सत है। एम यहाँ विश्व में स्वभाव में नित अवस्थित होने से द्रव्य सत है। स्वभाव क्या? ध्रुव उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम, परिणाम है, परिणाम नहीं। उत्पाद ध्रुव तीनों को परिणाम कहते हो, उत्पाद में ध्रुव तीनों को परिणाम कहते हैं। एक रूप चीज में तीन प्रकार हुआ ना, उत्पाद ने ध्रुव, फिर परिणाम हुआ, पर्याय हुई। जैसे द्रव्य का वस्तु, द्रव्य की वस्तु स्विस्तार, द्रव्य का स्वक्षेत्र, द्रव्य का स्व आकार निके, द्रव्य का स्वदौर, द्रव्य का घर, निवास स्थान, द्रव्य का आश्रय, दर्श की भूमि, समग्रपने द्वारा अखंड द्वारा एक होने पर भी आत्मा समग्रपने एक है। भले असंख्य प्रदेश है, पर असंख्य प्रदेश तरीके एक है। ऐसे होने पर भी विस्तार कर्म से प्रवर्तमान, जहाँ गुण का विस्तार जो अनंत है, तो उसका अलग कराने को उसके जो सूक्ष्म अंश है एक प्रदेश, आत्मा में असंख्य प्रदेश विस्तार ऐसा है। उसमें एक प्रदेश अंश है। आज वापस बोली। द्रव्य का वास्तु घर समग्रपन एक है, तो अभी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे प्रदेश है। आत्मा असंख्य प्रदेश है, ये समग्रपण एक है, पर उसका एक एक प्रदेश है, अंश भिन्न भिन्न है क्षेत्र में। ये प्रदेश है। उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने द्वारा एक होने पर भी क्या कहते हैं, वस्तु जो द्रव्य है, ये परिणाम जो टिकाव उसमें होता है, एक रूप परिणति है, एक रूप। जब विस्तार एक रूप है, उसमें एक एक प्रदेश भिन्न है। ऐसे परिणति पर्याय का विस्तार एक रूप होने पर भी एक एक परिणाम भिन्न भिन्न है। से रही जातों का धर्म है। ये समझવામાં ये है कि द्रव्य अपना परिणाम पे प्रणमते हैं, द्रव्य उत्पाद में ध्रुव रूपे प्रणमते हैं। ये कोई के कारण से प्रणमते हैं, ऐसे नहीं। नहीं तो क्रम सक्रम बदलेगा, सूक्ष्म क्रमबद्ध। आत्मा में असंख्य प्रदेशाएं ऐसा है समग्रपणे, छता उसमें एक एक प्रदेश ही भिन्न है। ऐसे समग्रपणे परिणति है अनादि अनंत। ये परिणति अनादि अनंत एक रूप होने पर भी एक एक परिणति समय के परिणाम भिन्न है। आई बात
વેપારી ને નવરાશ ન મળે, પછી કામાઈ કરો, પોવા કરો, ફલાણું કરો, ધર્મ હોગા, ધૂળે ધર્મ નહીં है। धर्म दूसरी कोई चीज है बापू। हाँ हाँ हाँ। द्रव्य की वृत्ति है नीचे, वर्तना होना अस्तित्व, समग्रपने द्वारा एक होने पर भी परंपि टिकाव, प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान प्रवाह क्रम, जो प्रदेश है ये प्रवाह क्रम में विस्तार क्रम है। आत्मा असंख्य प्रदेशी है, ये विस्तार क्रम ऐसे है, और परिणाम जो हम प्रवाह क्रम है, एक पीछे एक परिणाम उसके होता है, प्रवाह क्रम है। प्रवाह ये तरणों में आई गया है, तरण में प्रवाह क्रम का पिंड और विस्तार का पिंड उद्रव है। अरे बापू आ तो वितराग नो मार्ग लॉजिक से बात है, पण गमे तेटली भाषा एनी करे पण भाषा वस्तु स्थिति हो ऐसी आती है ना। हाँ हाँ, क्या कहते हैं, द्रव्य की वृत्ति समग्रपन एक होने पर प्रवृत्ति, प्रवाह क्रम में एक पक्षी एक प्रवाह क्रम में प्रवृत्ति, उसके जो सूक्ष्म अंश एक परिणाम, वे परिणाम है। आत्मा में असंख्य प्रदेश ऐसा है, विस्तार, उसमें एक प्रदेश है, ये भिन्न है, एक 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 ऐसा असंख्य है। एम आत्मा में त्रिकावी पर्याय जो अनंत गुण की है, ये प्रणति अमादि अनंत का जो प्रवाह क्रम है वो समग्र एक रूप है, उसमें एक एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, एक एक समय का परिणाम प्रवाह क्रम में भिन्न भिन्न है। आऊं से है सूक्ष्मसी परिणाम, जैसे विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। क्या कहते हैं, भगवान आत्मा जो असंख्य प्रदेश विस्तार क्रम है, उसमें प्रदेशों को परस्पर भिन्न भिन्न है, दरेक प्रदेश एक दूसरा प्रदेश से भिन्न भिन्न है। असंख्य प्रदेश है तो दरेक प्रदेश दूसरा प्रदेश से भिन्न है। हाँ हाँ है, विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक, विस्तार क्रम ऐसा, असंख्य प्रदेश में विस्तार क्रम है, उसमें एक एक प्रदेश का विस्तार क्रम है, भिन्न भिन्न है, विस्तार क्रम में एक एक प्रदेश है, भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है, एक पक्षी एक परिणाम होता है प्रवाह क्रम में, उसमें भी परिणाम जो है क्रम का ये परस्पर भिन्न भिन्न है, एक परिणाम दूसरा परिणाम से एक तो नहीं होता। हाँ 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 हाँ, तो तत्व कैसा है, सर्वज्ञ परमेश्वर ज्ञानेश्वर देव है, जैसा दिखा ऐसा तेरे समझना पड़ेगा। ये समझे कर के पीछे तत्व दृष्टि अभेद को देना, पहले समझे तत्व ही क्या है, समझे नहीं तो अभेद को दृष्टि कहां से करेगा। हाँ हाँ हाँ, भेद है, ये ज्ञान करने में भेद है, असंख्य प्रदेश है, पर एक एक प्रदेश दूसरा प्रदेश से भिन्न भिन्न है। एम आत्माना अनंत परिणाम है प्रवाह क्रम में, तथा एक एक परिणाम दूसरा परिणाम से भिन्न भिन्न है। हाँ हाँ, समझ में आया। जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न, धन्यवाद से प्रदेश असंख्य है ना, जे प्रदेश अपने स्थान में है, इस स्वरूप से उत्पन्न वृक्ष में आया तो आप प्रदेश है अंदर एक एक असंख्य में से,
और पूर्व रूप से विनष्ट। पूर्व का प्रदेश की अपेक्षा ये नहीं, ये अपेक्षा अभाव विनष्ट रूप है। वर्तमान प्रदेश का लक्ष्य करने से, असंख्य प्रदेश में एक प्रदेश का लक्ष्य करने से ये उत्पन्न करने में आया। पूर्व की प्रदेश उसमें नहीं है तो ये अपेक्षा, दूसरा प्रदेश उसमें नहीं, ये अपेक्षा विनष्ट करने में आया है। तथा सर्वत्र परस्पर अनुश्रुति, अन्वय पूर्वक जुड़ान, कायम एक पक्षी एक रचित एक वस्तु के द्वारा अनुत्पन्न अनिष्ट होने से उत्पत्ति साथ ध्रुवात्मक है। इसमें कहा प्रदेश की बात पहले क्या, आत्मा है कौन है खबर नहीं, आत्मा है या परमाणु शरीर से तो भिन्न तदन, तो अंदर असंख्य प्रदेश है। तो समग्र असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश दूसरा प्रदेश से भिन्न भिन्न है। ऐसे क्रमशः परिणाम होता है अनादि अनंत। इस समग्र प्रवाह क्रम से एक है, पर उसमें एक एक समय का परिणाम भिन्न भिन्न है। ऐसा ध्रुव का स्वभाव, ये खबर नहीं है। उत्पत्ति स्वाद ध्रुवात्मक है प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा। उसी प्रकार ये परिणाम अपने स्तर में स्वरूप से उत्पन्न। परिणाम पण एक समय में जो उत्पन्न होता है, ये अपेक्षा से उसको उत्पन्न कहने में आता है? वे परिणाम अपने अवसर में, अपने काल अवसर में ही परिणाम उत्पन्न होता है, आगे पीछे नहीं, क्रमबद्ध। अपने अवसर में जब परिणाम होता है तब वो परिणाम त्रिकाल की अपेक्षा से भिन्न है। बद्धा अनंत अनंत अनादि अनंत प्रवाह परिणाम है, उसमें एक परिणाम अपने अवसर में हुआ, वो दूसरा परिणाम से भिन्न है। क्रमबद्ध है, एक पीछे एक क्रमबद्ध परिणाम होता है। लोग को तेरे मानते नहीं कि क्रमबद्ध हो जाए तो पीछे पुरुषार्थ क्या रहा। एक पीछे एक परिणाम होता है, पुरुष अपनी क्रमबद्ध का निर्णय करने में अपना स्वरूप दृष्टि होती है, ये पुरुषार्थ है। हाँ तो भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, त्रिलोकनाथ की दिव्य ध्वनि के प्रभु तेरी चीज क्या है, कि विस्तार क्या है और प्रवाह क्या है। विस्तार में एक एक प्रदेश भिन्न है और क्रम प्रवाह करने भी एक एक परिणाम भिन्न है। एक एक प्रदेश पर नजर करने से उत्पन्न दृष्टि होती है, दूसरा प्रदेश की अपेक्षा विनष्ट है, और सारा प्रदेश एक रूप देखने से ध्रुव है प्रदेश है, उत्पन्न विनष्ट नहीं, ध्रुव में प्रदेश है, प्रदेश बस। ऐसे प्रवाह क्रम में परिणाम जो होता है, अनादि अनंत क्रम सर्व परिणाम होता है, अपने अपने अवसर होता है, ये परिणाम दूसरा परिणाम से भिन्न है। संतो ये दिगंबर मुनि हुई बात करी भाई, तो ये दिगंबर मुनि हुई बात करी भाई तारे आत्मा ऐसे जाना बिना तेरे आत्मा का ज्ञान हो, धर्म हो, ऐसा होता नहीं था। ये आत्मा क्या है, विस्तार क्रम में कैसा है, प्रवाह क्रम में कैसा है। विस्तार क्रम में विस्तार ऐसा और आत्मा तो विस्तार पौड़ा इतना, असंख्य प्रदेश से विस्तार, ये विस्तार અને परिणाम एक પછી एक होती है, वो प्रवाह क्रम, ये परिणाम अनंत है। विस्तार क्रम में भी एक एक प्रदेश दूसरा प्रदेश से भिन्न है, एम प्रवाह क्रम में या अनंत पर परिणाम होता है,
एक एक परिणाम दूसरा परिणाम से भिन्न है। हाँ 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 हाँ। परिणाम में भी ये देखो, हाँ, स्व उत्पन्न क्या कहते हैं, स्व स्वर में वो परिणाम उत्पन्न कहने में आया। हाँ हाँ। और पूर्वावस्था रूप से विनष्ट होने से पूर्व की परिणाम की अपेक्षा है वर्तमान परिणाम को विनष्ट जय कहने में आता है। अपने अपेक्षा से उत्पन्न कहने में आता है, पर की अपेक्षा से जय कहने में आता है। हाँ हाँ। અને સર્વત્ર પરસ્પર અનુસૂતિ રચિત એક પ્રવાહ દ્વારા પણ પરિણામ 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 કરો એમ અનાદિ અનંત એક રૂપ देखो। हाँ तो अनुत्पन्न अविनष्ट है, अर्थात परिणाम है। उत्पन्न आत्मा का असंग प्रदेश है, ये विस्तार क्रम, उसमें एक एक प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश से भिन्न है। तो एक प्रदेश में नजर पड़े तो उत्पन्न कहने में आया है, दूसरा प्रदेश की अपेक्षा विनष्ट कहने में आया है। अनेक प्रदेश है उसका नाम ध्रुव। ऐसे आत्मा का परिणाम कोई भी સાંભળ્યું ન મળે, જગતની મજૂરી કરીને મરી ગયા અંત આવશે। तत्व वितरा क्या कहते हैं, तत्व की यदि खबर नहीं, प्रतीति तो पछी है। आत्मा है, असंग प्रदेशी है और अनादि अनंत परिणाम वाला है। बे बात। હવે એમાં असंग प्रदेशी में एक प्रदेश है, दूसरा प्रदेश से नहीं। तो जब एक प्रदेश उपलक्ष्य हुआ तो उत्पन्न कहने में आता है, दूसरा प्रदेश की अपेक्षा है उसको विनष्ट कहने में आता है। और है एक ऐसे ध्रुव कहने में आता है। हाँ हाँ शांति आएगा जीवन वायु साधु। हाँ ऐसे आत्मा में परिणाम अनादि अनंत होता है, एक पीछे एक पीछे। ये प्रवाह क्रम का समग्र देखो तो एक पीछे एक होता है, पर एक पर्याय को देखो तो ये पर्याय जिस ऊपर बस गया हुआ इसको उत्पन्न कहने में आता है, और वो पर्याय पूर्व की पर्याय उसमें नहीं तो इस अपेक्षा विनष्ट कहने में आता है। और पर्याय है उसको ध्रुव कहने में आता है। आई बात है भाई। अरे सुन भाई हाँ तो हम जाए मुझे। हाँ 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 भाई कोई भी हाँ मिलने के बाद बाप दादा है कोई घर को हम भाई हम भैया ना बापा दादा है हाँ वस्तु हाँ बापू सितंबर काश में तो है ही नहीं। दिगंबर में है पर ये चलती नहीं है। क्रियाकांड करो तो थोड़ी माँ जो मुनिपुण जो लुगड़ा छोड़ो। वास्तविक तत्व क्या है, भगवान त्रिलोकनाथ क्या कहते हैं, और ये तत्व का दो रूप क्या है। ये तत्व एक है, उसमें असंग प्रदेशी उसका विस्तार क्षेत्र है, અને उसमें परिणाम टिकाली होता है प्रवाह क्रम में। प्रवाह क्रम में और विस्तार क्रम में एक प्रदेश ऊपर नजर करो तो उत्पन्न कहने में आता है, गुरु का प्रदेश की अपेक्षा एक प्रदेश को विनष्ट कहने में आता है, और एक प्रदेश है तो ध्रुव कहने में आता है। समझाई से क्या मनसुखभाई આવું જૂનું છે। પૂર્વત અનુસાર ભગવાન की दिव्य धनिक लोकनाथ प्रभु विराजे हाँ कठिन है नहीं, એને અભ્યાસ नहीं,
यहाँ तो ओमकार ध्वनि छूटती है। ओम ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे रति आज्ञा उपदेश भविक जीव संशय निवारे। શું થાય બાપુ, અત્યારે તો ક્રિયાકાંડની પ્રવૃત્તિમાં ઘૂંચીને મારી નાખ્યા બિચારા। वास्तविक तत्व क्या है? पौड़ा क्या है? पौड़ा विस्तार। और आम ऊर्ध क्या है? एक पची एक पर्याय कैसे? ये वस्तु का स्वरूप है। कृष्ण जो आ क्षेत्र है, जो आ क्षेत्र है, ये आ क्षेत्र नहीं, आ क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र नहीं। तो आ क्षेत्र जो है असंग दिशी 108 है। तो आ अपेक्षाएं उत्पन्न, पूर्व की अपेक्षाएं व्यय है, अपेक्षाएं ध्रुव और परिणाम हमें जो समय परिणाम हुआ, ये समय जो मोती जहाँ है क्या है, जहाँ है क्या है, ये समय जो परिणाम आत्मा में हुआ क्या है, समय में ये उत्पन्न हुआ और देखने में ये है, तो उसमें देखने से उत्पन्न कहने में आता है। पूर्व की अपेक्षा विनष्ट कहने में आता है। અને टिकाव में है तो भी पर्याय को ध्रुव कहने में आता है। આવું છે। હું પ્રેમભાઈ, आज ये मोती नो एक मोती है, ये दूसरा मोती ने नहीं। एम आत्मा ना असंख्य प्रदेश में एक प्रदेश में दूसरा प्रदेश नहीं। और आप एक परिणाम जो आनंद है आत्मा में, एक मोती एक परिणाम जिस जहाँ स्थान में है क्या है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ जहाँ है क्या है। एम आत्मा में जी समय अवसर परिणाम होता है त्या क्या है। क्रमबद्ध में जो परिणाम समय का हुआ क्या ये है। और ये तो परिणाम के ऊपर लक्ष्य करने से ये परिणाम को उत्पन्न कहने में आया है, दूसरा परिणाम उसमें नहीं तो विनष्ट कहने में आया है। ये परिणाम है इसको ध्रुव कहने में आता है। एक पर्याय को 3 गुण कहने में आता है। समझ में आया? આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આ ગાથાનો વિશેષ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। હવે સુખધામ બોલીએ।